स्मार्ट सिटी कहे जाते गुजरात के वडोदरा के नवापुरा इलाके में फैली हुई गंदगी स्मार्ट सिटी के नाम पर काले धब्बे जैसी प्रतीत हो रही है। वडोदरा के नवापुरा के माली मोहल्ला निकट गंदगी की भरमार है। यहाँ सालों से गंदगी होती है जिसकी परमानेंट सफाई नहीं हो पाती। कई नेता आए और गए लेकिन इस इलाके को कोई साफ नहीं कर पाया। स्वच्छता अभियान की बातें यहाँ सिर्फ कागजी साबित हो रही हैं। समस्या तो अहींया कायम गंदकीनी समस्या है। अहींया अमर त्यां जोई शको तमे केटलो कचरो छे। आ सफाई कर्मचारीओ आवीने जाय छे पण साफ सफाई थई जाय एना अर्धा कलाक पछी पाछो कचरो अहींया आवी ज जाय छे। અને અમારી માંગ એ છે કે વહેલી તકે આ કચરા પેટી દૂર થાય અહીંયાથી અને સફાઈ બંધ જ થઈ જવું જોઈએ। કેટલા સમયથી આ સમસ્યા કેટલા વર્ષોથી છે? આ વર્ષોથી છે સાહેબ। પહેલા તો અહીંયા ગંદકીમાં પેલા જાજરા હતા એ ટાઈમ પર તકલીફ હતી। હવે આ ખંડેર પડ્યું છે, સરકારે બનાવ્યું પણ કંઈ ઉપયોગમાં આવતું નથી। અમે રજૂઆત કરી છે પણ કંઈ નિકાલ આવ્યો નથી એનો હજી। અમે એવું ચાહીએ છીએ કે વહેલી તકે એનું સ્માર્ટ સિટી છે પણ એનો કંઈ ઉપયોગ થયો નહીં। અહીંયા સ્માર્ટ સિટી દેખાય છે આપણાને કે કેટલી છે અને થોડો વરસાદ પડતા અહીંયા પાણી ભરાઈ જાય, ઘરોમાં પાણી આવી જાય છે। એ માટે શું કહેશો કોર્પોરેટરને? અમે તો એ જ કહેવા માંગીએ છીએ કે વહેલી તકે એનો નિકાલ થાય અને એવું ઈચ્છીએ છીએ કે આ કચરા પેટી અહીંયાથી જતી જ રહે કાયમ માટે। તો અમારે નાના નાના બાળકો છે આખું 24 કલાક દરવાજા બંધ કરી રાખીને રહેવું પડે છે। દવાખાના 2-3 દિવસે દવાખાનામાં અમે લઈ જઈએ છીએ। કાયમનો કચરો આટલો હોય છે તો શું કેટલી તકલીફો પડતી હોય છે? 30 કલાકની તકલીફ છે અમારે। ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ सफाई नहीं होती है, लेकिन सुचारू सफाई नहीं होने से यहाँ रोज गंदगी फैल जाती है। न सिर्फ सफाई कर्मचारी लेकिन नागरिक भी गंदगी फैलाने के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। सफाई कर्मचारी भी यहाँ सफाई करते करते थक जाते हैं, लेकिन नागरिक जो हैं वो गंदगी फैलाने से नहीं थकते। हाँ છે નવાપુરા કચરા પેટી છે મોટી નવાપુરા। તો શું હોય છે રોજે આટલો કચરો હોય છે અહીં? અહીંયા દરરોજે આટલો કચરો નીકળે જ છે કાયમ માટેનો અને એના બધા રહેવાસીઓ બધા નાખી જાય એવું છે। પણ ડોર ટુ ડોર ગાડીઓ અહીં ફરતી હોય છે તો બી ફરે છે તો બી છતાં બી આટલો બધો કચરો હોય છે। ગમે ત્યાં બી જાઓ તમે પણ આખા વિસ્તારની અંદર નવાપુરાની અંદર તો કોઈ દિવસ ચોખ્ખું થવાનું જ નથી। અમે ઘસાઈ ગયા લોકો નથી સમજતા, નથી પબ્લિક નથી સમજતી એટલે આજ ભરવા ખાની જવાનું। તમે માનો છો કોર્પોરેશન દ્વારા કડકમાં કડક પગલાં લેવા જોઈએ જેથી કરીને આટલો કચરો ના એ લોકો તો કડક પગલાં લે છે જ પણ આ લોકો પબ્લિક નથી સમજતી એ વસ્તુ થાય છે। એટલે તમે કર્મચારી છો? હા અમે કર્મચારી જ છીએ। એટલે રોજ જ તમારે આ રીતના તકલીફ હોય છે? હા રોજની આ તકલીફ હોય છે અમારે। ગમે ત્યાં બી કોઈ બી વિસ્તારમાં નવાપુરા મૂકે એટલે તમારે સમજી લેવાનું કે તમારે એ થાય જેમ કચરો નીકળે જ 2-3 લાડી નીકળે। કચરો નાખવા આવે છે તમે કહો છો તો શું તમારી જોડે શું થાય છે? અરે અમારી જો ઊંધા જવાબ આપે જેમ કે ભાઈ અમારો કચરો લઈ જાઓ અમારો કચરો, પણ હવે અમે લારીમાં જેટલું આવે એટલું જ લઈ જઈએ ને। એટલે અમારો વિસ્તાર હોય તો અમે સમજ્યા પણ બીજાના વિસ્તારમાં જાય તો બી અમારી લારીઓમાં નાખી દઈએ એટલે આ બધા પ્રોબ્લેમ થાય છે બધા। તો શું માનો છો આ જગ્યાએ સીસીટીવી કેમેરા લગાવવા જોઈએ? लगावा જ જોઈએ, હું तो एम જ कहूँ लगाई दो तो बहुत सारू। गुजरात के वडोदरा में हाईवे का बरसाती पानी शहर में भर जाता है, जिसे रोकने की कवायद इन दिनों कॉरपोरेशन कर रहा है। वडोदरा में जब भी भारी बारिश होती है तो हाईवे का पानी पूर्व और दक्षिण इलाके में भर जाता है, जिसे निकालने में 3-4 दिन लग जाते हैं और लोग परेशान होते हैं। हाईवे का पानी शहर में आने से रोकने के लिए 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से पानी की पाइपलाइन डालने की जरूरत है, जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में हाईवे से आने वाली बरसाती पानी को रोकने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा एक समानांतर कांस बनाकर बरसाती पानी खेतों में छोड़ा जा रहा है। वडोदरा कॉरपोरेशन के अधिकारी इन दिनों कांस के कचरे को हटाकर कांस को चौड़ी करने की कवायद कर रहे हैं। બહુરાની અને શિવશક્તિ હોટલ પાસે જે આપણો હાઈવે સમાંતર કાંસ છે પરિવારથી છેક કપુરાઈ ચોકડી સુધી ત્યાં પાણી વહી રહ્યું છે અને બહુરાની હોટલ પાસે જે રેતીની થેલીઓ ધોવાણ ના થાય એના માટે મૂકી તથા બહુરાની હોટલથી સામે કપુરાઈ તરફ એક હાઈવે ક્રોસિંગ કરીને પણ એમનો જે પાઇપ હાઈવે વાળે નાખેલો છે। बारिश के होते ही गुजरात की स्मार्ट सिटी वडोदरा में नागरिकों की समस्याओं में कई तरह का इजाफा हुआ है, जिसका विरोध किया जा रहा है। वडोदरा के हाथीखाना के गेंडा फलिया में पिछले कई वक्त से ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है। इस मामले कोई कार्यवाही नहीं होने से परेशान स्थानीय महिलाओं ने वार्ड नंबर 6 के कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचकर वार्ड कार्यालय के अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया
और समस्या हल करने की मांग भी की। हमारे घर में जाजूर बाथरूम भरेले है, नहावे धोवे कहाँ, कपड़े कहाँ धोवे, क्या करने का कुछ समझ नहीं पड़ती। पानी भरेले है, बीमारी इतनी फैली है, अगर हमारे जैसे बीमार हो जाए तो कौन करेगा। हमको इसका हल चाहिए। पहले 2 दिन से पानी बरसात उतर गए, अब रुक गई है, जब भी पानी भरेला रहता है, तो ये कैसे करने का, कैसे चेंज करने का। અમે હાથીખાના ગેંડા ફળિયા વિસ્તારમાંથી આવીએ છીએ 16 ક્વાર્ટર્સ પાસે। આજે 8 દિવસથી અમારા વિસ્તારમાં ડ્રેનેજ લાઈન એટલી ઉભરાઈ છે કે જેની કોઈ હદ નહીં। વિસ્તારમાં ઓલરેડી કોલેરા ફાટી નીકળ્યો છે, નાના છોકરાથી લઈને મોટા સુધી બધા બીમાર પડ્યા છે। ઝાડા વામિટોનું વાવર ફેલાયું છે અને તંત્ર ઊંઘતું ઝડપાયું છે। કેટલા ટાઈમથી અમે રજૂઆત કરીએ છીએ, છતાં બી આવે છે, જોઈને જતા રહે છે। જેસીબી મશીન લગાવે છે, એનાથી કોઈ નિકાલ આવતો નથી। અમારી નમ્ર વિનંતી છે સાહેબને કે અમને નવા પાઇપ નાખી આપવામાં આવે અને પાણીનો નિકાલ અમને વહેલી તકે કરી આપવામાં આવે। સ્થાનિક કાઉન્સિલરને રજૂઆત કરી છે, છતાં કોઈ પણ કાઉન્સિલર ત્યાં ઝાંખવા પણ નથી આવતો અને અમને તો એ પણ નથી ખબર કે વડોદરાના મેયર કોણ છે કે કોર્પોરેટર કોણ છે। અમારા વિસ્તારમાં આટલા વર્ષોથી અમને પ્રોબ્લેમ છે, પણ છતાં પણ કોઈ સાહેબ ઝાંખવા પણ આવતું નથી। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री का जलस्तर बढ़ने से अलग अलग विस्तारों में मगरमच्छ निकलने की खबरें अब सामने आ रही हैं। वडोदरा में कुछ दिनों पहले भारी बारिश के बाद विश्वामित्री नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद विश्वामित्री नदी में रहने वाले मगरमच्छ बाढ़ के पानी के साथ अलग अलग इलाकों में पहुंच गए हैं। ऐसा ही एक मामला डभोई रोड पर सामने आया है, जिसमें सुल्तानपुरा गांव में खेत में मगरमच्छ दिखाई देने पर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट को जानकारी दी गई। ट्रस्ट के प्रेसिडेंट अरविंद पवार ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। 4 फीट का ये मगरमच्छ एक कमरे में चूल्हे के आगे पड़ा हुआ था, जिसे मशक्कत के साथ सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंप दिया गया है। आज रोज अमरी संस्थाना प्रेसिडेंट अरविंदभाई पवार पर सुल्तानपुरा गाममांथी ત્યાંના સ્થાનિકનો ફોન આવ્યો કે અમારા ખેતરમાં એક મગર આવી ગયો છે। આ કોલ મળતાની સાથે જ અમે વડોદરા વન વિભાગને જાણ કરીને ત્યાં આગળ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં જોતા અમને ખેતરની અંદર 4.5 ફૂટનો મગર જોવા મળ્યો હતો, જેને અડધો કલાકની બહાર જઈને એને રેસ્ક્યુ કરીને વડોદરા वन વિભાગને સોંપવામાં આવેલ છે। भारतीय इतिहास के सबसे महान गायक मोहम्मद रफी को उनकी 43वीं पुण्यतिथि पर उनके चाहक उन्हें दिल से याद कर रहे हैं। 31 जुलाई 1980 का वो दिन भारतीय सिनेमा संगीत के लिए एक मनहूस दिन के रूप में दर्ज है, जब मखमली आवाज के जादूगर गाते गाते एकाएक खामोश हो गए। उस आवाज पर दुनिया फिदा थी, हर संगीत और गीत प्रेमी कुर्बान था। हम बात कर रहे हैं स्वर सम्राट मोहम्मद रफी साहब की, जिन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों गीत गाए थे। रफी साहब ने बहुत सारे लोगों को उनके गानों के जरिए तो खुशी दी ही थी, साथ ही आज भी उनकी आवाज में उनके नगमे गाकर कई कलाकार अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। रफी जी की 43वीं पुण्यतिथि पर वडोदरा के नवापुरा में रहने वाले अरुण कहार ने रफी साहब को याद कर उनके सुनहरे नगमे गाए। में तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अभी नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग यूं भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग यूं भी गुनगुनाओगे। निकार तुझ सा
तेरे बाद आया न फनकार तुझसा, तेरे बाद आया मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। वडोदरा में डीजे सिस्टम और साउंड सिस्टम का व्यवसाय करने वाले नवापुरा के अरुण कहार रफी साहब के बड़े फैन हैं और उनके नगमे गुनगुनाकर हमेशा ही वाहवाही पाते हैं। आज इस खास दिवस पर भी उन्होंने अपने सुर के साथ साथ अपनी भावनाएं भी साझा की। आज 31 जुलाई है और रफ़ी साहब को याद करते हुए मैं अरुण कुमार सिंगर आज सुबह से उन्हों के गाने में सुनते आ रहा हूँ, न उनको याद करता हूँ मैं, न वो रफ़ी साहब की बातें कुछ और है। रफ़ी साहब थे कि आप उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। उन्होंने गाने भी एक से बढ़कर गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ में क्या ताजगी थी, ने कितने कैसे गाने गाए आपको पता भी होगा शायद। रोमेंटिक गाने गाए गए, सैड सॉन्ग गाने गाए गए, रुला भी देते थे, हंसा भी देते थे। वो एक ऐसे कलाकार थे, उनका नाम है रफ़ी साहब। दोस्तों वो नेचर के भी बहुत अच्छे थे, आप जानते ही होंगे शायद। तो मैं उनकी, हम लोग को तो कोई तुलना भी नहीं करते कोई सिंगर उनकी। बहुत आनंद होता है सर, उनकी आवाज़ सुनता हूँ तो एक शहद कान में घुल जाता है हमारे। बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत भगवान ने, अल्लाह ने उनको बहुत जल्दी बुला लिया है। आज भी हम उन्हें याद करते हैं कि रफ़ी साहब को